Good afternoon and welcome to Moneycontrol live stream. You're watching the closing bell. I'm Santosh Nair. And I'm Yatin Mota. The third successive day of gains for the Sensex and Nifty today. Bulls managing to build on Friday's big gains, and among the big gainers today we had largely shares from the banking and auto sector. In fact, 4 out of the 5 top gainers in Nifty were from the auto segment. And among the prominent laggards today, we had shares from the IT and oil and gas sector. These stocks struggled for direction. The India Volatility Index was down by close to about 3% to 12.56. And among the big gainers today, we had Hero MotoCorp, Coal India, Bajaj Auto, Maruti and Eicher Motors. Whereas among the losers, we had Infosys, ITC, Apollo Hospitals, Adani Enterprises and BPCL. So Santosh, market has started giving a feel good factor, especially when you open FY24 with strong gains. More importantly, बाजार का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था सैंटो, वो काफ़ी दिनों से आपको 4:1, 3:1 दिखाई दे रहा है. So the mid cap end of the market is recovering very, very sharply, and obviously today we started on a weakish note. End of the day अच्छी तरीके से तेजी के साथ हम बंद होते हुए दिखाई दिए. FNO सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स पे आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा. इन जनरल ऑटो सेल्स नंबर्स भी ठीक ठाक आए, जिसके कारण मार्केट को भी एक बूस्ट मिला कि डिमांड साइड पे सब कुछ ठीक है. इनफैक्ट मारुति सुजुकी जो इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी है, इनके सेल्स में भी आपने अबव एस्टिमेट परफॉर्मेंस देखा. स्टॉक में लगभग 2-2.5% की तेज़ी आपको होती हुई दिखाई पड़ी. ऑटो सेल्स सेटिस्फैक्ट्री, और अगर हम इन जनरल जो RBI पॉलिसी है उसके लिए वेट करेंगे. सैंटो, एक्सपेक्टेशन इज दैट RBI गवर्नर एक 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक लेंगे और उसके बाद एक पॉज का इंडिकेशन देंगे. डू यू थिंक वो पॉज का इंडिकेशन पॉसिबल है ये टाइम, और स्टिल जो सेंट्रल बैंक्स है वो वेट करेंगे फेडरल रिजर्व को एक सिग्नल देने के लिए कि भाई अभी इन्फ्लेशन जो है वो पीक आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब पॉज लेने का टाइम आ गया? So one thing is, if you were to look at inflation alone, Yatin, then clearly India is in a much better spot compared to some of the other economies. Now, so far India had also been forced to hike its rate. One of the factors was that the differential between the interest rates in the US and back home, they could not be very wide. Yeah. But now things are getting to a point. This is what some of the people in the market, some of the seasoned people in the market are saying, is that India is now coming to a point where its monetary policies will diverge from that of the US. Clearly will be able to handle things on our own. So it's not a given that we may now have to increase rates further, given that our inflation is in a much better position at this point in time. So most likely this there is reason to believe that the RBI governor might indicate a pause at this point. But also one thing to remember is that while inflation is in a much better ground in India compared to the rest of the world, here too, it remains a little on the higher side. It is not that it has fallen, but the bet here is that once crude oil prices and commodity prices start easing a bit, the fall in inflation in India may be much faster. So that is something what the market is betting on at this point. Absolutely. And with that, we move on to the stocks on our watch list this afternoon, beginning with SpiceJet. This was one of the big gainers. The reason for that being, the company today announced that it would be hiving off its cargo and logistic arms into a separate company, that is Spice Express and Logistics. Now, why does this move matter? That's because this will to some extent reduce the strain on SpiceJet's balance sheet. Now, SpiceJet has a huge negative net worth. By moving Spice Express and Logistics out of it, for which SpiceJet would get a consideration of little over 2,500 crores. Now, this is in the form of equity shares as well as compulsory convertible debentures. But where it makes a difference is that this will allow the separate entity, which is the logistics part of the business, also to raise funds. That right now was a big problem because the entity, that the combined entity, that is SpiceJet, it had negative net worth. So now by hiving off the cargo arm, that will allow that business to grow independently, plus SpiceJet having a stake in that company, it could also lead to unlocking of value for SpiceJet shareholders. But if you were to take a slightly step back and take a slightly big picture view, investors also need to keep in mind that
SpiceJet shares have been consistently underperforming for quite a while now. The company is now beginning to get some positive, tailwinds here, considering that crude prices have softened a bit. Of course, they've again moved up sharply over the weekend following the OPEC's decision to cut prices. But at the same time, the near-term view on oil prices, the near to medium-term view on oil prices, because of the situation unfolding in Europe and US, is that oil prices are likely to trend lower. Besides, let's also not forget that the fourth quarter and the first quarter of the next year, this is typically the time when there's a lot of holidays, vacations, people fly a lot. Besides that, you also have the business travel picking up in a big way. So these are expected to be good months. Already in the third quarter, SpiceJet reported a strong set of numbers. In fact, it returned to profitability after a very long time. So we'll have to see whether this move helps in changing the perception of the market about the stock and lead to a potential re-rating. एब्सोल्युटली ऑब्वियसली जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो तो एक टेलविंड रहेगा, एक बेनिफिट तो करेगा कंपनी को। लेकिन सैंटो वो जो मारन फैमिली है और जो अर्सवाइल प्रमोटर्स थे स्पाइसजेट के, उनका मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके साथ जो लोन कन्वर्जन, इक्विटी कन्वर्जन, ये 2-3 जो लीगल मैटर्स हैं उसके कारण एक बहुत बड़ा ओवरहैंग स्टॉक पे बना हुआ था। ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी एक फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रही थी, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे इनके जो प्लेन लीजिंग पार्टनर्स थे, इन्होंने भी प्लेन वापस लेने की जो है इनिशिएशन की थी। काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़ फ्लोज के हिसाब से नेगेटिव थी। लेकिन हाँ, जैसे कि सैंटो बता रहे हैं कि जो कार्गो आर्म है उसको अलग करने से शायद कंपनी को एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कैपिटल का और अपना बिजनेस फिर से एक बार रीबिल्ड करने का। होप ये करेंगे कि क्रूड प्राइसेस नीचे आएँ, जिसके कारण मार्जिन अच्छी तरीके से बढ़ें। लेकिन एविएशन के बाद जो सेक्टर फोकस में है वो है गैस सेक्टर। जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर में थी। MGL, IGL और गुजरात गैस, ये तीनों स्टॉक्स ज़्यादा प्रेशर में ट्रेड हो रहे थे। और ये इसलिए क्योंकि जो किरिट पारिक कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं वो कैबिनेट ने अभी तक अप्रूव नहीं की हैं। बाज़ार की होप्स ये थी कि 31 मार्च के पहले वो कमेटी के रिकमेंडेशंस अडॉप्ट हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। इससे क्या हुआ, जो गैस प्राइसेस है गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि APM गैस प्राइसेस लगभग $8.5 $8.5 पर MMBTU ही रहेंगी, जो आइडियली $7 $7.5 के आसपास होनी चाहिए थी। यानी यहाँ से $1 $1.5 कम होनी चाहिए थी फॉर्मूला के हिसाब से और किरिट पारिक कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से, क्योंकि कैलिब्रेटेड मैनर में जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि धीरे धीरे गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगे और एक सीलिंग होगी। वो जो है फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं हुआ और ये टेक्निकल रीजंस की वजह से जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेनिफिट होगा, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स को बेनिफिट होगा, वो नहीं हुआ। और देखिए एकदम धड़ाम से सारे के सारे गैस स्टॉक्स आज गिरे। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की और जेफरीज की जो कवरेज आई गैस स्टॉक्स पे वो देखने जैसी है। जेफरीज ने हालांकि मेंटेन किया है बाय अपना IGL पे 475 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और इनको लगता है कि होपफुली गवर्नमेंट किरिट पारिक कमेटी की जो रिकमेंडेशन है बहुत जल्द अडॉप्ट करे। इनफैक्ट CNBC TV 18 को भी किरिट पारिक साहब ने एक इंटरव्यू दिया था आज सुबह, और देयर ऑल्सो ही सेड दैट ही इज़ होपफुल कि उनकी जो कमेटी रिपोर्ट है वो अडॉप्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। रिकमेंडेशंस जो है सारे के सारे एक्सेप्ट कर लेगी गवर्नमेंट। सो इट इज़ टू बी सीन कभी एक्सेप्टेंस होता है, तब तक के लिए शायद ये स्टॉक्स प्रेशर में रहे। Also, Yatin, I think there would have been some bit of speculative build-up also, given that gas prices had started easing a bit, and this in turn led to the general feeling that probably things are now beginning to look better for gas. Definitely the pressure on margins is easing, so that would have led to a lot of speculative build-up over the last couple of weeks, and those positions maybe would have got unwound, but because otherwise if you look at it, overall the valuations are not so demanding for gas stocks at this point in time. And this revision in gas prices is still a matter of time because we still don't have the last word on it yet. The last stock on my watch list is KPIT Technology. The stock was a big loser in trade today, down by almost 14%. Now, the immediate trigger for the sell-off in KPIT Technology was JP Morgan initiating coverage on the stock with a target price of 520 rupees and an underweight rating. Now, this target price is the lowest among all the brokerages tracking KPIT Technology. Also, big concern according to JP Morgan is that the strong growth rates that we have seen, that could be a little difficult to sustain going forward, and in fact in FY24 JP Morgan expects the growth rate to fall below 20%. Now,
This comes at a time already when valuations are pretty stiff. In fact, the stock is now quoting at close to about 60 times, 64 times trailing 12-month price to earning ratio, which is clearly on the higher side. Also, JP Morgan feels that now investors wanting to invest in IT companies which have a specific focus on the auto vertical, they'll have one more alternative once Tata Technologies comes out with its IPO. This company earns about 88% of its revenues from the auto sector. The combination of factors which makes JP Morgan nervous about KPIT Technology at this point. Client concentration, also the growth rates which cannot be sustained. So these factors led to a big sell-off in the KPIT Technology stock today. And also one more point, Santo, के अब Tata Technologies का IPO आ रहा है, तो investors will also have a choice. And I remember JP Morgan similarly had come out with the report on Tata Elxsi that valuations are rich, and the stock then peaked. And there was a time when Tata Elxsi stock used to move 10-15% every day. And KPIT Technologies, in fact, this was the best IT stock, performing in Q4. I think the stock was up 30% in last 3 months. And look at how it has fallen today, almost 12% का correction. In fact, intraday में 16-17% गिर गया था. तो लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी बहुत यहाँ आपको कवरिंग आती हुई दिखाई पड़ी है. लेकिन हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट JP Morgan का. स्टॉक बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ था और ओवर द डे स्टॉक गिरता हुआ लगभग डेज लो पे क्लोज ये स्टॉक का आता हुआ दिखाई पड़ा. दूसरा एक स्टॉक जो आज 52 वीक हाई लगा रहा है वो है Zydus Life. मॉर्गन स्टैनली की यहाँ एक ओवरवेट कॉल है 513 रुपीज़ के टारगेट के साथ. ऑब्वियसली जो इनके निश और कोर बिजनेसेस हैं यूएस मार्केट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं. इनफैक्ट जो टोकरेंडी और रेवलिमिट करके 2 ड्रग्स हैं, यहाँ से कंपनी को अच्छे मार्जिन आ रहे हैं. इनफैक्ट जो नए अप्रूवल है उसके कारण भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. आपने देखा होगा पिछले काफ़ी वीक्स से कंपनी को कंटिन्यूसली यूएस FDA से नए नए प्रोडक्ट्स के अप्रूवल आ रहे हैं जो ओवरऑल मार्जिन्स को इम्प्रूव करेंगे. और मॉर्गन स्टैनली को भी यही लगता है कि अर्निंग्स मोमेंटम यहाँ से अच्छा होना चाहिए. कंपनी ने भी गाइड किया था कि जो प्री कोविड लेवल्स के मार्जिन्स हैं वहाँ तक कंपनी पहुँचने की कोशिश करेगी और अच्छी तरीके से जो है वो अपना पोर्टफोलियो ग्रो करेगी बोथ डोमेस्टिकली और यूएस मार्केट्स के लिए. तो ये स्टोरी है Zydus Life की. ये एक फार्मा स्टॉक जो नए 52 वीक हाई लगा रहा है. And well, with that, it's a wrap on this episode of Closing Bell. Thank you for watching and जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And we'll be back with you again on Wednesday 9 a.m. Yes. Tomorrow is a trading holiday. So have a good time and catch you again on Wednesday morning. धन्यवाद.